Assalamu alaikum and hello to everyone to Let's Talk Cricket. I'm your host Ihtisham. जहाँ मेरा चैनल जहाँ पे pretty much important cricket tournaments जो I feel like are important मैं कवर करता हूँ और इस वक्त जो चल रहा है वो है वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें I will examine which teams are going to be the most dangerous or you will be surprised. So stay tuned for that. Or there's also some news in regard to Pakistan cricket because Pakistan just played New Zealand in their warm-up game. So without a further ado, let's get into it. So start basically Pakistan New Zealand से करते हैं यार. First of all, let me say this: warm-up games are warm-up games. As a Pakistani fan, people are nervous. They're like, we have too many, issues going on. Or ये issues always existent थे यार, to be honest. It's not nothing new that Pakistan is going through. It's just we were winning at that time. So whenever you lose, लोगों को चीज़ें थोड़ी और notice होती हैं. तो nothing really surprising. You can't think our World Cup is going to go this bad in the future. क्योंकि warm-up game में लोग वैसे भी relaxed होते हैं. So first of all, I will say that. क्योंकि हम भी क्रिकेट खेलते हैं, हम भी सीज़न से शुरू होने से पहले प्री सीज़न गेम खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, दूसरी टीमों के साथ, जिसमें you're relaxed, you just trying to get through it without an injury and get some sort of confidence from either your bowling or your batting. And I think Pakistan had a lot of positives. मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं कंटिन्यू टू फोकस ऑन द नेगेटिव्स. पाकिस्तान के शॉर्ट कमिंग्स थे वार्म अप में जो थोड़े बहुत नज़र आए, जिसमें वन था कि pace attack didn't look as effective as it should have. Hassan Ali looked decent. लोगों को लग रहा है कि वो बहुत घटिया करा रहे थे. No, I don't think so. He was decent. He was wayward. जो होगा क्योंकि he hasn't played international cricket for a very long time. Same thing with Haris Rauf, right? Haris Rauf को भी इंजरी के बाद उसने कब probably नेट में इंडोर नेट में बॉलिंग कराता रहा है. So it's different. तो him being wayward was also unlikely to continue. और गुड थिंग इज़ कि ये चीज़ें अभी हो रही हैं ताकि पाकिस्तान इन पे कब वर्क कर सके और नोटिस करके आगे बेहतर हो सके. और जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि स्पिन. नवाज़ की कभी भी स्पिन नहीं हुई. सो आई डोंट नो व्हाई लोग सरप्राइज थे कि यहाँ पे भी नहीं हो रही. उसामा मीर को थप्पड़ पड़े हैं, लाइक ही गॉट हिट अ लॉट, बट आई थिंक ही वाज स्टिल इफेक्टिव, डिसेंट थे. एज ए लेग स्पिनर यू गेट हिट अ लॉट एंड आई थिंक उसके a little bit had to do with the fact कि warm up game था. और दूसरी चीज़ ये कि field setup जो था वो again it was a little bit questionable, but I get it. Like I said, warm up game है तो हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी हर strategy नहीं दिखाना चाह रहा था, तो understandable. जो positives आए and I think that's what we need to focus on. Number one, बाबर का बल्ला चला है जो I hopefully ये dead tracks पे any genuinely good batsman, which Babar is one of the best batsmen, इन डेड ट्रैक्स पे डेफिनेटली रन करेंगे और करने चाहिए. इस सब इंडिया में ज़्यादातर बैट्समैन की गेम है. तो इट वाज गुड टू सी बाबर स्कोर सम रन, इट वाज गुड टू सी रिजवान स्कोर सम रन एंड स्कोर देम एट अ गुड रन रेट. And then the genuinely best positive that came out was that Saud Shakil looked like a great batsman. I'm not saying कि वार्म अप गेम में रन करके वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन हो गया क्या हो गया, बट एटलीस्ट उससे थोड़ा बहुत ये कॉन्फिडेंस आया कि ही कैन एटलीस्ट बैट. And that was against a good team in New Zealand. अगर आप ये नोटिस करें, he played a quick inning, he played a stable inning at the same time. So it was good to see कि बीच में एक लेफ्टी अब ऐसा आ सकता है अगर we use him properly, जिससे अगर collapse हो रहा हो he can at least cover us. और अगर collapse नहीं हो रहा, वो genuine shots, over hitting के नहीं, genuine shots के साथ हम लोगों को runs दे सकता है. ठीक है. उसके बाद आगा सलमान फाइनली केम बैक फ्रॉम हिज कंकशन. ही लुक प्रीटी डिसेंट. आई डोंट थिंक ही लुक टू बैड. और उन्होंने थोड़े रन किए विच वाज गुड टू सी एज वेल. शदाब हैड हिज क्विक 10 runs whatever, but he didn't get to bowl. So I think those were the really good positives. I think Hassan Ali का वापस आना, he was getting some swing, he looked decent. वो आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आएगा. एंड द गुड थिंग इज़ कि पाकिस्तान की पहली नेक्स्ट एक और वार्म अप गेम है, फिर उसके बाद पहली गेम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ है, फिर उसके बाद श्रीलंका के ख़िलाफ़ है. तो आपके पास दो, आई एम नॉट सेइंग कि ईजी गेम्स हैं, बट रिलेटिवली ईजियर टू द नेक्स्ट गेम्स. तो इट गिव्स योर प्लेयर्स सम टाइम कि वो रिदम में आ सके. तो इट्स नॉट टाइम टू पैनिक फॉर द पाकिस्तानी फैंस येट. येस, स्पिन ने इफेक्टिव नहीं थे.
बट अगर आप नोटिस करें न्यूजीलैंड का मिचेल सैटनर इज़ अ गुड स्पिनर, रविंद्र जडेजा कि रविंद्र कुछ आफ्गा व्हाटएवर, देयर डिसेंट स्पिनर्स, उनकी भी स्पिन नहीं हुई थी। तो आप यू कैंट क्वेश्चन टू मच। शदाम ने बॉलिंग नहीं कराई, इफ्ती चाचू ने बॉलिंग नहीं कराई, तो देयर इज नॉट मच यू कैन से। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के गेम में क्या होगा। होपफुली पाकिस्तान विल लर्न फ्रॉम व्हाट देव सीन, और गुड थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें अभी एक्सपोज हो रही हैं, क्योंकि अगर ये अभी एक्सपोज ना होती हैं और ये आगे जाके टूर्नामेंट लेट, जब टूर्नामेंट मैटर करता है, ये चीज़ें आपके सामने आती, यू डोंट हैव इनफ टाइम टू वर्क ऑन दम। तो अभी आपके पास वो टाइम है, आप अपनी चीज़ों को फिक्स कर सकते हो, अपने केमिस्ट्री को, अपने ऑर्डर को, ये सारी चीज़ें फिक्स करके यू कैन बी मच मोर स्ट्रॉन्गर गोइंग फॉरवर्ड। सो पाकिस्तानी फैंस डू नॉट पैनिक यार। हम लोगों का यही होता है कि हम लोग बहुत जल्दी पैनिक करते हैं, या तो हम लोग उनको सर पे बैठा लेते हैं, या तो हम लोग उनको गाड़ना चाहते हैं। और एक वार्म अप गेम के बाद इफ़ यू आर ट्रू फैन यू वोंट बी डूइंग दैट। अभी बहुत टूर्नामेंट पड़ा है, अभी बहुत गेमें पड़ी हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट एंड सपोर्ट दीज गाइस, क्योंकि अब तो यही टीम है यार, यू हैव टू डील विद व्हाट यू गॉट। सो लेट्स होप दे डू बेटर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेट्स होप वो अपनी थोड़ी और बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करें, इन द सेंस ऑफ शादाब को सम ओवर्स मिलें, फ़खर ज़मान को सम प्लेइंग टाइम मिले। आई थिंक ये जो गेम थी इसमें पाकिस्तान ने इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनको फॉर्म में लाने के लिए पाकिस्तान ने इतनी चीज़ें नहीं की। बट नाउ दैट रिजवान इज़ इन फॉर्म, बाबर इज़ इन फॉर्म, साउथ शकील इज़ डूइंग वेल, आप फोकस करें कि फ़खर जैसा बंदा अगर उसको खिलाना पड़ गया, उसको थोड़ा प्ले टाइम मिले, शादाब को थोड़ी स्पिनिंग मिले, वसीम जूनियर को सम मोर ओवर्स मिले, एटलीस्ट यू कैन से कि ताकि पता चले कि यार वो एक ही, आई डोंट बिलीव इन द गाय, बट क्या वो वर्थ इट है कि उसको खिलाया जाए कि हसन अली को। तो उन दोनों को टेस्ट करने के बजाय के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में उनको ज़्यादा ओवर फिर से दीजिए। तो लेट्स सी व्हाट पाकिस्तान डज। आई एम नॉट टू नर्वस। Pakistan is always been like this. They've always made us doubt them, and then they come out of nowhere. So let's see. तो ये था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के एनालिसिस गेम, वार्म अप गेम में, और इट वाज जस्ट लाइक अ वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर आवर गाइज एंड आवर पाकिस्तानी फैंस कि यार डोंट पैनिक जस्ट येट, देयर इज अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट टू गो। नाउ द नेक्स्ट वन इज माय प्रेडिक्शंस फॉर द वर्ल्ड कप। देखिए भाई, इस साल जो वर्ल्ड कप है ना, उसका जो फॉर्मेट बना है, देयर इज नो ग्रुप्स, देयर इज नन ऑफ दैट क्रैप गोइंग ऑन, इट्स प्रीटी मच एवरीबडी प्लेज एवरीबडी, and in the end the top 4 teams are the ones that are going to make it to the semi-final, and then top 2 teams are going to make to the finals. तो उस हिसाब से दिस टूर्नामेंट इज़ वेरी ओपन। आप किसी से भी हार के आपकी स्टैंडिंग्स मूव हो सकती हैं, आप किसी से जीत के भी आपकी स्टैंडिंग मूव हो सकती है, रन रेट भी बहुत मैटर करेगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू मैटर। और उसके हिसाब से मेरी बेसिकली प्रेडिक्शंस 3 कैटेगरी में ब्रेक होती हैं। नंबर 1 इज़ फेवरेट्स, नंबर 2 is more likely to make it to the semi-finals, and then dark horses. Dark horses are जिनके जो बहुत आउटसाइड चांस है, अनप्रडिक्टेबली वो टॉप 4 में पहुंच जाएंगी। The favorites have to be England and India. Why? यार, if you look at their squads, first of all, England is a deadly squad. उनका बेंच भी इतना स्ट्रॉन्ग है, उनका दे हैव गुड डेप्थ, उनका मोइन अली 8वें नंबर पे बैटिंग करता है यार। दे हैव स्पिन, दे हैव पेस इन मार्क वुड, इन क्रिस वोक्स, उनकी बैटिंग इज़ स्टेबल। उनकी अगर कोई इंजर होता है, उनका बेंच इज जस्ट एज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आई डोंट थिंक हैरी ब्रुक विल बी प्लेइंग इन द टॉप इन द 6, राइट, आई मीन इन द प्लेइंग 11। वो अगर बेंच पे बैठा है आपके पास, आई डोंट नो इफ बेन डकेट को डाला कि नहीं डाला। दे हैव डिसेंट ऑलराउंडर्स इन बेन स्टोक्स एंड लियम लिविंगस्टन, सो दे हैव अ रियली सॉलिड स्क्वाड, एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू इंडिया विद द एडिशन ऑफ अश्विन कमिंग इन इंस्टेड ऑफ अक्षर पटेल। इंडिया इज जस्ट एज स्ट्रॉन्ग, इंडिया का बेंच भी जस्ट एज स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इन दोनों टीमों ने अपने ये जो सीरीज़ होगी, कह लो कि आयरलैंड के ख़िलाफ़, नेपाल के ख़िलाफ़, या इस तरह की जो भी सीरीज़ हुई हैं उनकी, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, उन्होंने अपनी बेंच को टेस्ट किया।
राइट अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इंडिया की सीरीज़ हुई जिसमें उन्होंने ऋतुराज को टेस्ट किया उन्होंने, क्योंकि ऋतुराज जाके एशियन गेम में खेलने वाला है। उन्होंने ईशान किशन को ट्राई किया, इवन दो के एल राहुल इज द प्लेइंग 11 कीपर। उन्होंने सूर्य कुमार यादव को सर्टेन नंबर पे खिलाया। ये सारी एक्सपेरिमेंट शमी को ट्राई किया, शमी के बजाय प्रदीश को ट्राई किया। उन्होंने सब कुछ ट्राई कर के देख चुके हैं। एंड बोथ ऑफ दोस टीम नो कि उनका प्लेइंग 11 क्या है, ठीक है। और अगर उनका प्लेइंग 11 में से कोई इंजर होता है तो उसकी जगह पे कौन आने वाला है, और उस जगह वाले को भी उन्होंने इनफ प्लेइंग टाइम, इनफ एक्सपीरियंस दे चुके हैं कि दे कैन रिलाई ऑन हिम, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दीज टू टीम्स आर द फेवरेट्स टू मेक इट टू द फाइनल्स। I believe England will win the World Cup, even though people say India this and that. I think England is not scared of anybody. England is just, they have the best balance, क्योंकि जहाँ पे उनका जहाँ पे they overtake India is their pace attack. India has a decent pace attack, but it's not up to the level of England, right? So overall, England has the edge, but these two teams are the जो final में पहुँचेंगी. Now, the semi-finalist. Up until about 2 days ago, 3 days ago, जब तक Steven Smith injured था, Travis Head looked a little bit questionable. Steven Smith looked questionable coming back from injury. Travis Head was injured. Labuschagne seemed a little bit off. Kilter, Mitch Marsh, all of that. मेरे हिसाब से Australia was not going to make it. But based on what they've done, in regards to how they look today, based on what they've done before the Indian series, I think Australia does make it to the semi-final. I think in the second category, the people that are likely to make it to the semi-final are Australia and Pakistan. And I'm not saying Pakistan just because I'm a Pakistani fan, but it's because दोनों के पास spin attack इतना strong नहीं है, batting इतनी strong, batting is up and down sometimes, और pace attack is decent, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के पास नसीम शाह नहीं है, but overall they're balanced enough squad. They've been playing together for a very very long time. They have in a good coaching, और उन दोनों में they're unpredictable in the sense कि जब उनका दिन जब वो एक rhythm catch करते हैं, they continue with the rhythm. So from that point of view, I think Australia and Pakistan are likely going to be semi-finalists, and they're both used to playing in dry-ass conditions. Australia, उनका भी squad में there's a little bit up and down as to where certain people will fit this and that. Same thing with Pakistan. But the unpredictability does not negate the fact that these two teams are the top 4 ICC ranked teams. So you have to give them some credit. So I think your semi-finalists are going to be England, Australia, and Pakistan and India. So then we get to the dark horses. अब ये dark horses ऐसी टीमें होंगी कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैंने एक dark horse क्यों पिक किया है, but I will. मेरा first dark horse जो है वो है, हर किसी को लग रहा है कि न्यूजीलैंड बोलूँगा, but no, South Africa. Now why South Africa? Is because number one, South Africa की team has experience. They have experience of choking as well, but they have experience. The only pacer they're missing is Andrea Nokia and Magdala. और Magdala तो अभी नहीं recent आया, लेकिन उनकी टीम डेप्थ बैटिंग में बहुत है. आपके पास डिकॉक है, आपके पास रीजा हेंड्रिक्स है, मार्करम है, डेविड मिलर है, हाइनरी क्लासन है अगर वो चाहें, और उनके पास probably the most experienced and the most effective spin attack उनका है, in the sense of Maharaj and Shamsi. तो and their pace attack is not bad either. तो from my point, क्योंकि उनके पास मार्को जानसन है, tall, 135 142 तक हिट कर लेता है, but he's effective क्योंकि वो बॉल को स्विंग कर लेता है. Overall, they've played in the Indian conditions a lot, based in IPL, so they have that experience, and I think they're always a dangerous side, and unki fielding is always the best. They always win a lot of games because of their fielding. So I think they're doing well. Bavuma has recent form, so I think they're a good dark horse to bet on. They can sneak in there and upset one of the
either the finalist teams or either the semi-finalist teams. Now, the second one is going to be a surprise to everybody, which is going to be, I believe, Bangladesh is a dark horse in this World Cup. It's not New Zealand. I don't think New Zealand is going to get anywhere. Bangladesh is a dark horse क्योंकि Bangladesh की team is playing with a chip on their shoulder. उनको एक prove करना है अपने आप को. And they finally have a balanced squad. अगर आप देखो, they got a combination of youngsters and a lot of experience. They have a very good spin attack. Their all-rounders are very good spinners as well. Their pace attack is really good too. उनके पास मुस्तफिजुर है, उनके पास सोफिल या इस तरह कुछ नाम है उसका. उनके स्पिनर्स में उनके पास शाकिबुल हसन है, he was top all-rounder, whatever, great batsman. उनके पास मेहदी हसन है, तो उनके पास नुसूम है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है. उनके पास फाइनली विद गेटिंग तमीम ऑफ दे गॉट अ यंगस्टर, उसने वार्म अप मैच में रन किए हैं. उनके पास मुशफिकुर है, उनके पास मोहम्मदुल्ला है, उनके पास हिर्रेदोए, वेरी गुड यंगस्टर, उनके लिंटन दास. सो ओवरऑल देर अ वेरी वेरी गुड स्क्वाड. The only reason they're not in the semi-finalist list is because Bangladesh has a history of not doing well in big ICC tournaments. They've always been an underdog, but I think this year they have a very, very good chance. They believe in themselves. They're not afraid of any opposition, and they're making all of the games very, very close to other, opposition. So overall, I think Bangladesh and South Africa are the two dark horses that can upset any of the four semi-finalists. Now, अब लोग पूछेंगे न्यूजीलैंड क्यों नहीं? Yeah, New Zealand has always been a underdog, and last 50 over World Cup, I think they were the finalist. But this year they're aged. Our Kane Williamson is not there. वो अभी return कर रहा है. पाकिस्तान ने उसकी help की by bowling like crap. But I still don't believe कि उनकी इतनी stability है टीम में, और उनकी bench strength. If they lose somebody, their bench is not as good as anybody else's. They're similar to in the sense of Pakistan, but other than Trent Bolt, unka second seamers aren't that good. They don't have somebody like Haris Rauf to partner with Trent Bolt, whereas Pakistan has Shaheen and Haris Rauf. So unka spin attack is very, very weak in the sense of every other team, kind of like Pakistan's spin attack. Ravindra is being decent, but these are dead tracks. I don't think he's going to do that well. So experience bhi nahi hai. Next is Mitchell Santner. Glenn Phillips is a part-time off spinner. So there's not like a good spinner there. Ish Sodhi, wo har jagah pitta hai bhai. India mein to pitega hi pitega. So overall, I don't think New Zealand has a good enough squad to compete. Or unki previous year it hasn't gone well either, especially when your captain is coming back in, there's going to be some changes. There's going to be some inability to understand who fits where. So that's why I'm not counting them in. So, ye thi meri team hai. Finalists, I think, are going to be England and India. I think semi-finalists are going to be England, India, Pakistan, and Australia. And the dark horses are going to be South Africa and Bangladesh. So let's see what happens. Let's see मेरी prediction सही है. आप मुझे बताइए comment section में कि आप क्या समझते हैं, कौन सी टीमें हैं जो basically पहुंचेंगी in the semi-finals, in the finals. Who do you think is going to win? I think England's going to win it again. But that's just my opinion. As a Pakistani fan, I want Pakistan to win it. But, what paper says is that England has the best squad. So let's see. Anyways, that's all I have for you guys for this video. Hopefully आप लोगों को पसंद आया होगा, तो hit and like and subscribe button. नहीं पसंद आया तो फिर भी hit the like and subscribe button. Leave the comments in the comment section. Let's talk about it, man, if you don't like it. Anyways, I will see you guys in my next video.